हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduTap। अगर आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, if the audio is clear and the video is clear, I request you to give me a confirmation in the chat box. If the audio is clear and the video is clear and you can hear me, please give me a confirmation in the chat box. We are here to discuss economics and social issues. This is lecture 9 in the series of lectures, and basically I hope that you have gone through lecture number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and have benefited from the same. Right, we have discussed a number of important questions in those videos, and we have also solved a lot of homework questions. At the end of every video we are providing you homework questions. Remember friends, that practice is what is going to help us in the examination. No amount of theory reading will in itself be sufficient. We have to practice, practice and practice for RBI Grade B and NABARD Grade A 2020 and 2021, which is what the purpose of these live sessions is. So everything that EduTap is doing is exam oriented, and we want you to solve questions. So we hope that you are participating wholeheartedly. I am waiting for certain confirmations in the chat box. Audio and video is clear, then we'll roll ahead. Right? Manideep Reddy, good evening. Yogesh Joshi, audible. Nikhil Gupta, good evening. Good to go. Priya Gairi, audible and visible. Durlabh Raghuvanshi, audible. All right. So let us begin. Anjali Sharma, hi. Right. So let us begin. So as usual, stay home, stay safe, stay online. Do not spread corona. Keep yourself safe. Keep yourself out of harm's way. We have recently crossed 1 million cases of coronavirus positive patients in India. It is an alarming and a serious kind of a situation, right? Because the number of cases are increasing every day by 30 to 35,000 new cases per day. So it is a really, really difficult situation out there. If it is not required for you to step out, do not step out. Do not endanger the lives of your elderly back home by stepping out unnecessarily and then bringing that possible disease back home. Everybody is vulnerable, be it rich, be it poor, be it privileged, be it underprivileged. So we have to all be safe. So I hope that you are going to follow these guidelines. So far as NABARD exam is concerned, we are expecting that the phase 2 will be in the first week of September 2020, right? So I hope that you're preparing well for phase 2. You have started preparing your ESIs and your ARDs and your all topics related to phase 2. You have started preparing the same, right? So far as what we are doing for your preparation, we have launched a 50% off offer for NABARD Grade A 2020 phase 2 course. You're supposed to use NABARD 50 NABARD 50 code while enrolling for this course, and you will be availing a 50% off. You know that EduTap has a very exam oriented, comprehensive, cost effective as well as a proven track record in these examination, right? We have had decent number of successes in the past, and we request you to avail of these benefits and do well for your professional progress and career. I have been asking a lot of questions in my live sessions. At the end of every live session, I give out 5 homework questions, and these are the names of students who have been attempting those homework questions. It is my privilege, it is my honor to take the name of these students, because it is really difficult to do these homework questions. You know, you require some level of sincerity and commitment towards your task, towards your exam, right, towards your own, you know, preparation. To do these homework questions, it doesn't matter whether we have gotten it right or wrong. As a matter of fact, I can tell you that many of the students have answered at least one question wrong, which is the best outcome in my opinion, because by getting that one question wrong, they have learned that one thing. So I've answered back in the comment section that what mistake they have made. So Anjali Sharma, Disha Gautam, Durlabh Raghuvanshi, Ashwini Kansal, Aditya Jamwal, D Anand, Rakesh Kumar and Harshvardhan, I really thank you all for attempting the homework questions of the previous live session, and I'll be requesting you all to again attempt the questions of this live session. I'll also be requesting others to attempt, because if you make a mistake, for me that is the best possible outcome, because then there is an opportunity to learn, then there is an opportunity to not repeat that mistake in the examination. So we are going to move ahead, and in this particular session I'm going to talk about various exchange rate mechanisms, that how exchange rate is determined, what are the different methods of determining exchange rate. This is a very important topic, a very exam relevant topic, which has relevance not only in static part of the syllabus but also in the current affairs part of the syllabus. So I'll be discussing in detail various exchange rate mechanisms. So the first question has been placed in front of you. In a floating exchange rate system, the government intervenes to influence the exchange rate. The exchange rate should adjust to equate the supply and demand of the currency. The balance of payment should always be in surplus. The balance of payment will always equal the government budget. None of the above.
यू हैव बीन आस्क्ड कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है, क्या सरकार हस्तक्षेप देती है, गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, क्या एक्सचेंज रेट को हम सप्लाई डिमांड के फोर्सेस के ऊपर छोड़ देते हैं, सप्लाई डिमांड के फोर्सेस एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को एक्सचेंज रेट को, क्या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा सरप्लस में रहता है, क्या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल्स द गवर्नमेंट बजट रहता है, कौन सा ऑप्शन सही है, नन ऑफ द अबव भी आंसर हो सकता है। जो भी आपका आंसर है फॉर क्वेश्चन 1 उसको आप कमेंट कर देंगे जितने भी लोग प्रेजेंट है। अब मैं देखता हूं कि आप लोगों के क्या कमेंट्स आए हैं, राइट। चलिए अभी आप लोगों के सब लोगों के कमेंट्स देखेंगे, राइट। सो एवरीबडी इज हियर, अंजलि, नितेश, शुभेंद्र, चिन्मय, प्रशांत सागर, शिवानी ठाकुर, hi, I'm fine Shivani, I hope that you're doing well. Manideep Reddy, Durlabh Raghuvanshi, Shivani Thakur, Ripshita Banerjee, Vivek Malla, Nikhil Gupta, आप लोगों के आंसर्स बी है। प्रशांत सागर योर आंसर इज ए, शुभेंद्र योर आंसर इज बी, नितेश, योगेश, प्रिया, राकेश योर आंसर्स आर बी, right? So let us look at what floating exchange rate system is all about. Let us understand the way we approach in this session. We'll be looking at the explanation and then we will have again an opportunity to answer this question, which will be helpful for those who have not been able to answer and will be helpful for those who have been able to give an incorrect answer. So when we talk about floating exchange rate system or flexible exchange rate system, what is it that we are essentially talking about? If the exchange rate, let us say in the month of January is 60, in the month of February it can go down to 65, in the month of March it can go down to 70, in the month of April it can go down to 75 or vice versa, right? If it is 75 it can go up to 70, it can go up to 65, it can go up to 60. That means that these market participants can decide what the price of the exchange rate should be or what the exchange rate should be. You know that what exchange rate is. Exchange rate is the price that you have to pay in domestic currency to purchase 1 unit of foreign currency, राइट। दैट इज द आइडिया बिहाइंड एक्सचेंज रेट कि अगर सपोज कर लीजिए कि हमारे को $1 खरीदना है तो हमें कितने रुपए देने पड़ते हैं। अगर 60 रुपए देना पड़ता है तो एक्सचेंज रेट ऑफ रुपी वीजा वी डॉलर इज 60। To purchase $1 if we have to give 65 rupees, then exchange rate of rupee vis-a-vis dollar is 65, so on and so forth, right? So what happens in a flexible exchange rate system is that it's a hands-off approach. It is not as if that the government or the RBI is trying to control the exchange rate, that no, exchange rate must remain at this level only and it cannot go up, it cannot go down. No, we are not doing any of those things. Exchange rate is free to fluctuate. This is a non-intervention approach. सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, सरकार इंटरवेंशन नहीं करती है, सरकार की कोई एजेंसी इसके अंदर इंटरवीन नहीं करती है। इक्विलिब्रियम थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। सो वॉट एवर एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड, वॉट एवर लेवल ऑफ एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड, दैट इज डिटरमाइंड थ्रू द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इफ द डिमांड फॉर एक्सचेंज रेट इज हाई, if the demand for foreign exchange is high, exchange rate will change. If the supply of foreign exchange is high or low, foreign exchange will change. How that is going to happen, that is something that we are going to discuss going ahead, right? So currency is free to appreciate and depreciate. So what is the meaning of appreciation and what is the meaning of depreciation? For anybody or somebody who has zero idea about this appreciation depreciation concept, this is appreciation. If in January our currency exchange rate is 75 vis-a-vis dollar, right? If it becomes 70 in February, it becomes 65 in March, it becomes 60 in April. If this kind of movement in exchange rate is observed, this is called appreciation. कि 75 था, फिर 70 हो गया, फिर 65 हो गया, फिर 60 हो गया. And what is depreciation? Depreciation में पहले 60 था, फिर 65 हो गया, फिर 70 हो गया, फिर 75 हो गया, right? So if this kind of movement in the exchange rate is seen, right, this is called appreciation. And if this kind of movement in the exchange rate is seen, this is called depreciation. So I hope that you understand the meaning of flexible exchange rate system and you understand what is the meaning of appreciation and depreciation. यदि किसी को भी appreciation, depreciation और इन concepts के अंदर डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, बाद में कमेंट कर सकते हैं, मैं बाद में पक्का आंसर कर दूंगा. बट इस बेसिस के ऊपर, based upon this understanding, if you look at this question in a floating exchange rate system, which is just another name for flexible exchange rate system, the answers that I was seeing was majority of the answers were B. अब भी अगर किसी को आंसर देना है तो आप अपना आंसर दे दीजिए, फिर मैं आपके सामने आंसर रखना चाहूँगा. ह्यूमन बीइंग, सौमेन दास, चौहान, अजय सिंह, चिन्मय साकिया, उपेंद्र, योर आंसर्स आर बी. सौरभ चंडोला, हाई, right? So many of you all have been giving answer B, some of us have given answers A. Answer to this question indeed is B, that the exchange rate should adjust to equate the supply and demand of the currency. जो equilibrium है
एक्सचेंज रेट का वो डिटरमाइन होगा बेसिस ऑन द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो डिमांड सप्लाई के हिसाब से एक्सचेंज रेट अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, राइट। अभी विवेक मल्हा आपने एक क्वेश्चन पूछा है कि डिप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है, राइट। और विवेक जी आप केवल 10 मिनट का मेरे को समय दीजिए, 10 मिनट के अंदर मैं आपको इसी वीडियो के दौरान क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर करवाने वाला हूं कि डिप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो बलीराम, हिमांशु, शिवानी, प्रशांत, आप सबके आंसर्स भी करेक्ट है। लेट अस मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 2। और ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ अ, आई वुड से, अ डिफिकल्ट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। इफ यू गेट इट राइट, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ। इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, डू नॉट अटेम्प्ट इट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइजरी दैट आई गिव इन एवरी लेक्चर ऑफ माइन। नहीं आता है छोड़ के आओ। रीजन ये है कि नेगेटिव मार्किंग हमें नहीं लेकर आनी है। एडुकेटेड गैस आप कर रहे हैं, दैट इज वन थिंग। आप ब्लाइंड गैस करने लग रहे हैं, अंधेरे में तीर चलाने लग रहे हैं, दैट विल बी वेरी वेरी डिजास्ट्रस फॉर अस। One potential problem for a country with fixed exchange rate is that a decrease in the demand for its currency can create a drain on foreign exchange reserves used to maintain the exchange rate. The currency is probably prone to depreciation. Exchange rates are fixed as a result of the devaluation of the currency. A current account deficit will result. Merchandise imports will exceed merchandise exports. These are difficult questions. Why this is a difficult question? Because option E is talking about import export, option D is talking about current account deficit, option C is talking about devaluation, option B is talking about depreciation, option A is a very long option. So in the options, very challenging concepts have been placed, and the question is itself about a challenging topic. To that extent, this is a really difficult question in my opinion. If you get it right, I'm very happy, but if you don't get it right, it is okay, and do not attempt it, right? So let us start discussing these concepts. Let me see what answers, preliminary answers have been shared, right? So Ripshita Banerjee, you are asking whether the answer is A. I will let you know in a short time. Yogesh Joshi, you are saying that the answer should be 2A. Shivani Thakur, you are saying that the answer should be 2A, right? Manideep Reddy, answer should be 2A, right? So many of us are giving answer as A. Now let us talk about fixed exchange rate system. Okay, we have already discussed about flexible exchange rate system. Now please use logic. Okay, flexible exchange rate system is hands-off approach. Flexible exchange rate system is non-interventionist approach. Flexible exchange rate system is where the forces of demand and supply determine what the exchange rate should be, and the government or its agency does not step in to determine what the exchange rate should be. That is something that we studied so far as flexible exchange rate system is concerned. Now when we are talking about fixed exchange rate system, what do you think will be the approach? Will we have a hands-off approach or hands-on approach? Will we have a non-interventionist approach or will we have an interventionist approach? Will the government and the RBI intervene or not intervene? So I am presuming that you are getting the answer कि flexible और fixed में अगर difference है तो बस डिफरेंस इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर होगा. सो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर सरकार और सरकार की एजेंसीज डिटरमाइन करती है कि एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए. सो इफ द गवर्नमेंट विशेस फॉर द एक्सचेंज रेट टू बी 70, इट विल बी 70. इफ द गवर्नमेंट विशेस इट टू बी 75, it will be 75. If the government wishes it to be 65 instead of 70, it will be 65. So government and its agencies determine what that exchange rate should be. Now how is it that the government or its agencies are able to hold the exchange rate up to a particular level? That is something that we need to understand, because that is something which is really tricky. So fixed exchange rate system is all about government establishing and maintaining an exchange rate. So government will establish an exchange rate and government will maintain that exchange rate. Now this is something that we will be discussing about in a short time, right? So how does government maintain a particular exchange rate? Through monetary policy action, exchange rate is kept fixed. How? I am going to tell you. Government is willing to buy and sell currency in whatever amounts, and this is where the answer lies, and this is where we will discuss. अब मैं 2 मिनट का समय लूंगा आपको और आपको सारी चीजें समझाऊंगा. सपोज कर लीजिए कि मैंने डिसाइड करा कि मुझे करेंसी की एक्सचेंज रेट 70 रुपया रखनी है. आई वांट टू कीप द एक्सचेंज रेट एज ₹70. That means that at ₹70, if you are asking for a truck full of dollars, I should be ready to supply you a truck full of dollars at ₹70. At ₹7, if the exchange rate is ₹70, and if you give me truck full of dollars, I should be ready to exchange that for 70 rupees per dollar and give you probably 70 trucks of rupees. Are you getting my point? So what I'm repeating it again for your benefit, that if I have fixed exchange rate as ₹70,
if you ask for a truck full of dollars, I should be in a position to give you a truck full of dollars at 70. Only then it will be remaining a fixed exchange rate. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ट्रक फुल ऑफ डॉलर मांगा तो मैं डर के भाग गया, मैं बोला ना ना भाई 70 रुपए में तो मैं ट्रक फुल ऑफ डॉलर नहीं दूंगा, राइट. एंड इफ यू bring truck full of dollars and you ask for rupees in return, then I should take that dollar and I should exchange it for rupees 70. That means that the government is willing to buy any amount of currency at rupees 70. It is ready to sell any amount of dollars at rupees 70. So if the government is willing to buy and sell any amounts of dollar at rupees 70, then the exchange rate will remain 70. If the exchange rate is 75, same thing is true for 75. If the exchange rate is 65, same thing is true for 65. Now the important point to realize is that let us assume that for any reason whatsoever, the demand of dollar goes up. So just imagine what happens in a vegetable market. If demand for tomatoes goes up, okay, tomato or tomatoes, whatever, if the demand for tomato goes up, okay, so what happens is that the prices of tomato go up. If the demand for tomatoes go down, prices of tomatoes come down. That is what happens in a natural market, that if the demand increases, prices should increase. If the supply or the demand decreases, prices should come down, everything else remaining constant. Now in a fixed exchange rate system, there is a problem. If the demand for foreign exchange increases, right, so that dollar should become expensive. Let us say that earlier there was this level of demand for dollar, now there is this level of demand for dollar, so we have a higher demand for dollar. So if there is a higher demand for dollar, so the price of dollar should increase. If the dollar was available today at 70 rupees and tomorrow if the demand for dollar is very high, then the price of dollar should increase. It should become 72, it should become 73, it should become 75. If the demand for dollar is very low, then the price of dollar should come down. So if today the price of dollar was rupees 70 and if the demand for dollar has gone down, so the price of dollar should be 68 or 67 or 66 or 65. Well, it should come down. Now what happens in a fixed exchange rate system is that exchange rate is fixed. So no matter what the demand is, no matter what the supply is, the exchange rate is fixed. Now this is where the problem lies. The question asked you, the question told you that if your domestic currency ka price is, if your domestic currency ka demand goes down, when domestic currency ka demand goes down, okay, the value of domestic currency will reduce, and if the value of domestic currency is reducing, that is problematic because ours is a fixed exchange rate system. So what will the government do? Government will step in. Since the value of domestic currency is reducing vis-a-vis the foreign currency, government will increase the supply of foreign currency to keep the value of rupee stable, to keep the value of rupee at par, right? So that is what the problem is, that even in this scenario, when naturally there is the demand of rupee is low and the value of rupee is going down, at that point in time government will not let the value of rupee go down. So what will the government do? Government increase the supply of dollars to keep the value of rupee stable, and that is how we will drain our foreign exchange reserve empty because of this fixed exchange rate system. So currency can be devalued or revalued. Somebody asked me what was devaluation. Somebody asked me what is the difference between devaluation and depreciation. Depreciation is a concept associated with floating exchange rate, and devaluation is a concept associated with fixed exchange rate, is point number one. In depreciation, market forces pull the value of domestic currency down. In devaluation, government sets the value of rupee down. So this is the difference between devaluation, right? And what is revaluation? So if the fixed exchange rate system mein the currency ka exchange rate was 70, then it is taken to 65, that is called revaluation. And if in a fixed exchange rate system the currency ka exchange rate was 70, it is taken down to 75, that is called devaluation. So I hope that these concepts are clear to you, right? Based upon this understanding, I had placed this question in front of you. A decrease in the demand for its currency can create a drain on foreign exchange reserves used to maintain the exchange rate. This is the answer to question number A. Question number 2, that the answer to this question indeed is A, and many of us, I was seeing, was getting this answer right, and I'm very happy to note that, because in my opinion this is a little bit of a tricky question to solve, and if you are able to solve it, then that is very, very good. Baliram, your answer is correct. Somen, your answer is correct. Nitesh, you left the question, that is a very good thing that you did. Rakesh, your answer is correct. Chinmoy, your answer is correct. Priya, you left the question, that is good. Ambika Joshi, you got the answer right.
Nikhil Gupta, I have tried to explain it. Shubhendra, your answer is correct. Yogesh Joshi, your answer is correct. Ripshita, your answer is correct. I hope that this is clear. If there is any doubt, you can be completely free in discussing in the comment section later once the video is over, right? And I will come back with even more lucid explanations for you all. There is always a possibility of simplifying things down further. So do not hesitate in asking the doubts later in the comment section once the video is over. I will get back to you. Moving ahead to question number 3. A potential problem with free floating exchange rate is that, now see, earlier in the question number 2 we discussed the problem with fixed exchange rate system. Now we are discussing problem with a floating exchange rate system or a free float exchange rate system. So what is it, the message that you should take home? The message that you should take home is that no exchange rate system is perfect, in the sense that it is not as if that any exchange rate system is completely devoid of problems. Every exchange rate system has one problem or the other, right? And that is what we are trying to discuss and understand from an academic perspective. So potential problem with free floating exchange rate is that people who practice arbitrage may gain from the losses of others. What is the meaning of arbitrage? You should know. Uncertainty in exchange rate fluctuations may hinder international trade. Exchange rates may never reach equilibrium. Currency markets may become monopolized. Less developed countries may issue too much currency. Now this is again a question in which the options are really heavy duty kind of options. They are very difficult to understand. If I were to take a class only upon the options of this particular session, that class will go into a few hours to be able to, explain each and every word of the options. That is the beauty of some of these difficult questions, right? But the question as such is not difficult if the theory is known to you. You just need to know the theory and little bit about it, and you will be very easily be able to answer it. And we have taught everything in our courses at EduTap. The ESI, all the courses that we are offering, and ESI is obviously a part of the course that we are offering, right? So far as the RBI and the NABARD exam is concerned, it is a beautifully crafted course which starts from scratch upwards, and everything is built up from the very basics, such that students, especially from non-economics background, completely understand economics and social issues. Completely means completely. ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए जो आपको नहीं समझ में आए. So let us see what your answers are for question number 3. Baliram, your answer is A. Somen, your answer is A. जितने भी लोग आंसर दे रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज राइट 3A और 3B और 3C और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज देन आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं. निखिल गुप्ता, आई एम प्रिज्यूमिंग दैट यू आर आंसरिंग फॉर B. दुर्लभ 3B. शुभेंद्र 3B. हिमांशु ढींगरा, आपका आंसर इज 3B. Priya Gairi, your answer is 3B. Vanshika Sharma, your answer is B. Yogesh Joshi, 3B. Shivani, B. All right. I'm assuming that all of you are answering for question number 3, right? So let me place the explanation for this in front of you. We are going to talk about a managed floating system, and please be very, very attentive in this particular explanation, because I'm going to explain something really beautiful to you, right? In a managed floating exchange rate system, what is the meaning of managed floating? Let me tell you the soul of it first. Freely floating means the currency can fluctuate in whichever way it wants. If it wants to appreciate, it can appreciate it. If it wants to depreciate, it can depreciate. It can appreciate as much as it wants. It can depreciate as much as it wants. There is no restrictions whatsoever. In managed floating, there are some restrictions. What is that? That is something that we need to discuss. So the idea is that assume that the exchange rate is 70 and it goes towards 65 and it is going towards 60. Okay, it is going towards 60. So appreciation is happening. Okay, we have gone from 70 to 65 and we are trying that the currency is moving towards 60. At this point in time, when the currency has already crossed 65 and it is going towards 60, the government intervenes in the foreign exchange market. Why? Because government feels that anywhere around 62 or 63 is the fair value of rupee. Anything above that is not fair so far as the rupee's exchange rate is concerned. So we want to keep the value of rupee within this particular range, below this particular range of, let us say, 62 or 63. So the government has determined, the economists who are basically advising the government or who are advising the Reserve Bank of India, they have determined that this should be the upper range, that we should not allow rupee to appreciate more than this. Okay, we should not allow that to happen. So at that point in time, what will happen? RBI will buy foreign exchange. What happens by buying foreign exchange? Let us assume that there are dollars in the market, right?
एंड रुपीज अप्रिशिएटिंग। ओके, रुपीज अप्रिशिएटिंग का मतलब रुपया जो है पहले $1.70 में मिल रहा था, अब $1.65 में मिल रहा है, अब आगे चलते हुए $1.60 में मिलने की आपको संभावनाएं हैं, राइट। एट दिस पॉइंट इन टाइम आरबीआई स्टेप्स इन एंड इट स्टार्ट्स बाइंग फॉरेन एक्सचेंज. By buying foreign exchange, what is RBI doing? RBI is increasing the demand of foreign exchange, right? RBI is reducing the supply of foreign exchange in the market, and जैसे ही कोई भी चीज की सप्लाई कम हो जाती है तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है. Since RBI has started buying foreign exchange from the market, foreign exchange available is lesser. Since foreign exchange available is lesser, it will become costlier. What is the meaning of foreign exchange becoming costlier? तो पहले अगर $1 if you were getting at 63, now that dollar has become costly, so you will get it at 64. If it is available at 64, if it has become costlier, then it will become available at 65 or 66 or 67. So what happened is that the moment RBI saw that the rupee has touched 62, they started buying dollars. And by buying dollars, they reduced the supply of dollars in the market, and the moment the supply of dollar in the market reduced, the price of dollar increased. So if the dollar was available at 62, then it became available at 63, 63.50, 64, 64.50, and then RBI is happy. Why? Because RBI doesn't want rupee to appreciate, let us say, beyond 62. Okay, so RBI has purchased foreign exchange. It has reduced the supply of foreign exchange in the market, and the cost of foreign exchange increases. Okay, so too much appreciation has been checked. This was too much appreciation. 70 से 65 हो जाना, 65 से 60 की तरफ जाना, this is too much appreciation. अब आपको उल्टी गंगा बहा के दिखाते हैं. उल्टी गंगा बहा के दिखाते का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि बहुत ज्यादा डिप्रिसिएशन होने लग रहा है, कि 60 से 65 पे आ गए, 65 से 70 पे आने लग रहे हैं, राइट. अब 70 के ऊपर जब आने लग रहे हैं तो टेंडेंसी रुपी की ये है कि वो 75 पर जाना चाहता है. At this point in time, RBI again steps in. Why? Because as per the Reserve Bank of India, the fair value of rupee should not be lower than 72. Let us assume that we are comfortable that rupee is valued at 72, but anything below that we are not comfortable. At this point in time, the Reserve Bank of India steps into the foreign exchange market, right? जैसे ही lower range आया, जैसे ही रुपी ने 72 टच करा, वैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंटर होगी मार्केट के अंदर, एंड आरबीआई विल स्टार्ट सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज. आरबीआई विल स्टार्ट सेलिंग डॉलर. RBI will increase the supply of foreign exchange. RBI will increase the supply of dollar. By increasing the supply of anything, क्या होता है, उसका प्राइस कम हो जाता है. अगर सब्जी मंडी में टमाटर का भाव, टमाटर की सप्लाई को एकदम इंक्रीज कर दिया जाए अचानक से, तो टमाटर का भाव जो है वो कम हो जाएगा. अगर हमने फॉरेन एक्सचेंज की मंडी के अंदर डॉलर की सप्लाई को इंक्रीज कर दिया तो डॉलर का प्राइस कम हो जाएगा. तो डॉलर का प्राइस कम हो जाने का मतलब क्या होएगा कि अगर डॉलर पहले मान लीजिए 72 रुपीज में अवेलेबल था, अब वो 71 में अवेलेबल होगा, अब वो 70 में अवेलेबल होगा, अब वो 69 में अवेलेबल होगा, अब वो 68 में अवेलेबल होगा, और आरबीआई का जो मिशन है वो अकम्प्लिश हो जाएगा कि जो टू मच डिप्रिसिएशन होने लग रहा था, द टू मच डिप्रिसिएशन दैट वाज हैपनिंग, दैट विल स्टॉप. Right, so I have explained to you, or rather I have tried to explain to you, how the managed floating exchange rate system works. If there is too much appreciation, RBI will start buying foreign exchange. If there is too much depreciation, RBI will start selling the foreign exchange. And why is RBI doing this? Because RBI is comfortable with the rupee being between anywhere between, let us say, 62, 63 and 71, 72. अगर 62, 63 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो उसको नीचे खींचो, अगर 71, 72 के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो उसको ऊपर खींचो. तो ये प्रकार का जो सिस्टम है इसे हम कहते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम. In managed floating system, we are having a combination of fixed and flexible exchange rate system. We have fixed a range. इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, इसके बाहर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं जाने देंगे, इसके बाहर निकलने नहीं देंगे. सो वी आर हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड. आपको मजा आ रहा है और लर्निंग मिल रही है और समझ में आया तो यस टाइप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेरे को कंफर्मेशन चाहिए कि आपको समझ में आया है, तो मेरे मन में शांति मिल जाएगी मुझे, राइट. गवर्नमेंट इंटरवीन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, आरबीआई इंटरवीन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, right, so that we can avoid excessive and sudden movement. This is excessive movement. appreciation हो रहा है 70 से 65, 65 से 60 की बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रहा है, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 ये बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रहा है. This is excessive movement. We don't want this, right? So to be able to avoid this kind of a scenario, we are using managed floating system, and most nations in the world use this kind of a system. Currency is allowed to fluctuate but within a particular band. Exchange rate is kept within acceptable limits. And what is the acceptable limit? Acceptable limit ये limit है जो कि हमने यहाँ पर आपको diagrammatically दिखाने का प्रयास करा है. Why is it that we want to keep the exchange rate within this particular band? अगर इसके ऊपर जाएगा
तो फिर एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स को प्रॉब्लम होएगा, अगर इसके नीचे जाएगा तो एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स को प्रॉब्लम होगा, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा वो मैं आपको अगले क्वेश्चन में समझाने वाला हूं, लेकिन एक चीज मैं आपको बता सकता हूं ये हूं कि इसके ऊपर जाने से ट्रेड में प्रॉब्लम है, इसके नीचे जाने से ट्रेड के अंदर प्रॉब्लम है, इसीलिए हमारे को एक्सचेंज रेट को इस बैंड के विद इन रखना है। मैंने ये आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, बेसिस के ऊपर ये क्वेश्चन आपके सामने रखा है। फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर क्या प्रॉब्लम है, जिसको मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम सॉल्व करने की कोशिश करता है। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना था। अगर आपको सारी चीजें समझ में आई है, मजा आ रहा है, तो कमेंट करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। आई विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू, राइट। प्रिया गायरी आपने यस टाइप करा, शुभेंद्र आपने यस टाइप करा, चिन्मय यस, राकेश यस, विवेक यस, अंजलि यस, सौमेन यस, बलिराम यस, शिवानी यस, दुर्लभ यस, मणिदीप यस, वंशिका शर्मा यस, राइट, विवेक कुमार यस, ह्यूमन बीइंग यस, थैंक यू वेरी मच, आप लोग ने यस टाइप करा। जो भी डाउट्स है बेझिझक आप लोग डाउट्स अपने कमेंट सेक्शन के अंदर छोड़ना। आफ्टर द वीडियो एंड्स मैं आपके डाउट्स का कमबैक करूंगा विद एन आंसर, प्रॉपर आंसर। अब आप लोग मेरे को क्वेश्चन नंबर 3 का सारे लोग आंसर दे दीजिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दे दीजिए। जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, आपको मजा आना चाहिए सारी चीजों के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने के अंदर, इकोनॉमिक्स पढ़ने के अंदर, मैं तो ये मानता हूँ मजा आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो आप लोगों को भी पढ़ने में मजा आएगा, मेरे को भी पढ़ाने में मजा आएगा। अंजलि आंसर इज 3B। लेट अस सी, सारे लोगों का आंसर बता दीजिए, राइट, सारे लोगों का आंसर बता दीजिए। एंड बी इज इंडीड द राइट आंसर ओवर हियर। जितने भी लोगों का आंसर बी है, बी सबके राइट आंसर्स है। निखिल गुप्ता योर आंसर इज करेक्ट, राइट। चलिए, बहुत शानदार आप लोगों के परफॉर्मेंस आने लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 4, राइट, मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, दुर्लभ, रघुवंशी, वंशिका, सौमेन, आप सबके आंसर्स बी है, बिल्कुल सही आंसर्स है। स्टीप अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसीज जनरली अकम्पनीड बाय व्हाट? इंक्रीज्ड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया, gain for exporters, loss for importers, all of the above, none of the above. Ab this is application based question. We have spoken about appreciation, depreciation, we have spoken about devaluation, revaluation, we have spoken about flexible exchange rate, floating exchange rate, managed floating exchange rate. Now we are trying to apply, we are starting to apply, and I have been able to place obviously only one question in front of you in this live session, but in our course we are giving you many number of questions to check whether your application is right. Steep appreciation of domestic currencies generally accompanied by what? Increased supply of foreign exchange, gain for exporters, loss for importers. सोच समझ के आपको आंसर देना है। जो भी आपका आंसर है उसको आप कमेंट करना शुरू करिए, मैं आपके आंसर्स को देखना शुरू करता हूँ। शुभेंद्र, ह्यूमन बीइंग, चिन्मय, शिवानी, हर्ष, प्रिया, आप सबके आंसर्स आर बिल्कुल सही आंसर्स है। 3B के जो आपने आंसर्स दिए हैं। और 4th क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। मेरा एक एडवाइजरी है, आप लोगों को अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आप लोग स्किप कर दीजिए। ऐसा आप लोग उसको जो है ना एक ऑनलाइन पोकर गेम मत समझिए कि कुछ भी कर देंगे तो कुछ लॉस नहीं है। वी हैव टू बी इन द राइट माइंड सेट, इन द राइट मेंटालिटी फॉर द एग्जाम, राइट। मेनी ऑफ अस आर गिविंग वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ आंसर्स, ओके। दुर्लभ, यू हैव गिवन आंसर 4A, वंशिका यू हैव गिवन आंसर 4D, आर्या, हर्ष यू हैव गिवन आंसर C, विवेक, मल्ला यू हैव गिवन आंसर D, राकेश कुमार यू हैव given answer A, Soumya you have given answer B, Soumen you have given answer D, विवेक कुमार साहा यू हैव गिवन आंसर ए। बहुत सारे अलग अलग आंसर्स आने लग रहे हैं, बहुत अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग ईच वन ऑफ अस, अगर आप चाहे तो आप अपने आंसर्स को रिट्रैक्ट कर लीजिए। आई विल कंसिडर दैट यू हैव नॉट अटेम्प्टेड द क्वेश्चन, बिकॉज अगर आप रिट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप बोल रहे हैं कि आपको पक्का मालूम है कि द आंसर शुड बी व्हाट यू आर सेइंग, एंड अगर वो गलत हो जाता है देन यू आर गेटिंग नेगेटिव मार्क्स फॉर योर सेल्व्स, ओके। सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग वन कॉन्सेप्ट बाय द अदर। अगर अभी भी कोई रिट्रैक्ट करना चाहता है तो अपने आंसर को रिट्रैक्ट कर सकते हैं। वीडियो खत्म होने के पहले आप लोग सब लोग अपने स्कोर्स बताइएगा कि आप लोग को क्या स्कोर्स आए हैं। 1 आउट ऑफ 4, 2 आउट ऑफ 4, 3 आउट ऑफ 4, 4 आउट ऑफ 4। स्कोर बता के जाइएगा, बिना स्कोर बताए नहीं जाइएगा, और एक्सपीरियंस शेयर करना अपना, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि अगर देर इज एन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? दैट फॉरेन एक्सचेंज हैज बीन कमिंग अ लॉट इनटू इंडिया, बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आ रहा है, यानी कि सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल इंक्रीज। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज की जब सप्लाई बढ़ जाती है तो उसका कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। तो अगर पहले एक्सचेंज रेट जो है, फॉरेन एक्सचेंज जो है आपका 69 रुपीज में अवेलेबल था, अब वो 68 में अवेलेबल होगा, अब वो 67 में अवेलेबल होगा, वो 66 में अवेलेबल होगा, 65, 64, 63, 62, 61 ऐसे करके
करके अवेलेबल होगा। तो जैसे ही सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होता है, कॉस्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर एज वेल। सो देयर विल बी अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. Domestic currency will appreciate. It will go from 70 vis-a-vis $1 to 65 vis-a-vis $1 to 60 vis-a-vis $1. This will cause a loss for exporters and gain for importers. I will tell you exactly how. Right? So the idea is, how is it that this is a loss for exporters? Assume that you are an exporter, okay, and I'm an American buyer. Okay, I came to India. I got $1. Okay, I exchanged it for rupees 70 and I purchased, let us say, 14 pence worth rupees 5 from you. ठीक है ना? I came with $1, I got 70 and 70 rupees, and I gave that 70 rupees to you, and you gave me 14 pen worth rupees 5 to me. After 2 months I come to India, I bring $1, okay, and I exchange that $1, let us say, from HDFC Bank, and I get only rupees 60 in return, and I give that rupees 60 to you, and you give me only 12 pence. What will I tell you? That you gave me 14 pence earlier, now you are giving me only 12 pence. This is the last time that I am buying from you. I am going to Bangladesh to buy. Why? Because in Bangladesh, for $1 I will still get 14 pence. So if I was earlier buying from you, I will not buy from you anymore. Let me explain this to you once more. 14 rupees, I got $1, exchange it for rupees 70, gave that 70 rupees to you, you gave me 14 pen worth rupees 5. I came to India with $1, I exchange it for only rupees 60 because rupee has appreciated. Okay, so I got only 60. I gave that 60 to you, gave me 12 pence. So earlier you were exporting 14 pence, now you are exporting only 12 pence. You have lost me to Bangladesh. Why? Because I don't want to buy from you anymore, right? So exporter will lose, and how will importer gain? Let us assume that now you are an importer. Okay, so what you do is that you purchase a candy from America or a chocolate from America which is worth rupees $1. Okay, so earlier you used to go to HDFC Bank, give 70 rupees, buy $1, and use that $1 to buy that candy from America. After 2 months, you are giving only 60 rupees to HDFC Bank, getting $1, and using that $1 you are able to buy that candy or chocolate from America. So earlier you had to spend 70 rupees to get hold of that one candy. Now you are spending only 60 rupees to get hold of that one candy. As a result of which you have benefited. मान लीजिए कि आप वो कैंडी को इंडिया में 100 रुपए में बेच रहे थे, तो पहले आप 70 की चीज खरीद के 100 में बेच रहे थे, अब आप 60 रुपए की चीज खरीद के 100 में बेच रहे हो. आपके तो व्यारे न्यारे हो गए, आपके तो मजे ही मजे हैं. सो इंपोर्टर हैज गेन्ड एंड एक्सपोर्टर हैज लॉस्ट इन अप्रिसिएशन. एंड डिप्रिसिएशन के अंदर इसका एकदम उल्टा होगा. डिप्रिसिएशन क्यों होता है? कि देयर इज एन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. व्हेन देयर इज एन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिड्यूसेस. जब कोई भी चीज का सप्लाई रिड्यूस होता है तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है. अगर मंडी के अंदर टमाटर का सप्लाई कम होगा, एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग द सेम, टमाटर का भाव बढ़ जाएगा. फॉरेन एक्सचेंज की मंडी के अंदर डॉलर का अगर सप्लाई कम होगा, एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग द सेम, कॉस्ट ऑफ डॉलर विल इंक्रीज. दिस इज रेफर टू एज डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. और इसके अंदर इंपोर्टर लूज करेगा और एक्सपोर्टर जो है गेन करेगा. यहाँ पर मेरी गलती है, यहाँ पर इधर लिखा होना चाहिए था गेन फॉर एक्सपोर्टर्स. इस गलती के लिए मैं माफी चाहूंगा. लॉस फॉर इंपोर्टर्स एंड गेन फॉर एक्सपोर्टर्स. बेस्ड अपॉन दिस अंडरस्टैंडिंग आई हैव प्लेस्ड दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. जो मैंने आपको स्टोरी समझाई वो स्टोरी आपको लिखनी आनी चाहिए अपने हाथों से. एंड द डे यू कैन राइट द स्टोरी दैट आई टोल्ड यू, $1 70 रुपीज 14 पेन, $1 60 रुपीज 12 पेन, 70 rupees $1 1 candy, 60 rupees $1 1 candy, right? The story that I told you, the story that I narrated to you, you should be able to write that story down from your own imagination, and the day you can do that, you will never get these kind of questions wrong, no matter how hard they are, no matter how difficult they are in the examination, no matter how twisted they are in the examination. Steep appreciation of domestic currency is generally accompanied by what? I request everybody who is watching the video to give me an answer to question number 4, and please write 4A 4B 4C so that I can understand कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं. राइट, चलिए, अगर आप लोगों को समझ में आ गया, राइट, तो आप लोग येस टाइप कर दीजिए. राइट, मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि जो अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन है उसकी वजह से एक्सपोर्टर इंपोर्टर को क्या फायदा नुकसान होगा, इफ यू हैव अंडरस्टूड दैट प्लीज टाइप येस, तो मुझे तसल्ली हो जाएगी कि आपको समझ में आ गया है. राइट, लेट अस सी आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 4. राइट, so the Somen Das, you have given answer 4A. Baliram, you have given answer 4A, right? And answer to this question is indeed A. When there is steep appreciation, right, there is increased supply of foreign exchange. जब supply of foreign exchange बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि
कॉस्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि रुपये का अप्रिसिएशन हो जाएगा। एक्सपोर्टर्स का लॉस होगा, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि $1 पहले 70 देता था, अब 60 देता है। 60 के बदले पहले 14 पेन मिलते थे, 12 ही पेन मिल रहे हैं, तो एक्सपोर्टर का लॉस हो जाएगा। और एक्सपोर्टर का लॉस है तो ऑटोमेटिकली इंपोर्टर का गेन है, एंड देयरफॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए। 4 का आंसर इज ए, राइट। निखिल गुप्ता, राइट। वंशिका, चिन्मय, योर आंसर्स आर करेक्ट। इफ एनीबडी स्टिल हैविंग एनी डाउट, कोई बात नहीं, बेझिझक आप लोग ये वीडियो एंड हो जाने के बाद जो है कमेंट कर दीजिएगा और पूछ लीजिएगा कि क्या परेशानी है आप लोगों की, मैं आप लोगों को आंसर उसका दे दूंगा। ये हो गया हमारे सेशन का एंड फॉर सो फार एज लेक्चर 9। और अब मैंने देना है आपको होमवर्क के क्वेश्चंस। और जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं, राइट, अंजलि, बलीराम, राइट, चिन्मय, सौम्या, ह्यूमन बीइंग, शुभेंद्र, प्रिया, राकेश, राइट, वंशिका, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि होमवर्क के क्वेश्चंस का आपको पक्का जवाब देने। मणिदीप, शिवानी, विवेक, अमित, योगेश, सबका एग्जाम आ रहा है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसका एग्जाम नहीं आ रहा। अगर आपका एग्जाम नहीं आ रहा है तो आप होमवर्क के क्वेश्चन मत करिए, लेकिन अगर आपका एग्जाम आ रहा है, राइट, चाहे वो नाबार्ड फेज 2 आ रहा हो, या आगे आरबीआई का एग्जाम आ रहा हो, या आगे नाबार्ड का एग्जाम आ रहा हो, अगर आपका एग्जाम आ रहा है और उस एग्जाम में इकोनॉमिक्स आपको पूछा जाने वाला है, और इकोनॉमिक्स आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प करता है, बहुत सारे पेपर्स में हेल्प करता है, तो कोई आपका एग्जाम अगर आ रहा है, आप कैंडिडेट है कोई एग्जाम के, तो आप एक स्टूडेंट्स हैं, तो आप इस क्वेश्चन को आपको आंसर करना चाहिए। इफेक्टिव रेवेन्यू डिमांड इज कंप्यूटेड बाय एक्सक्लूडिंग होना चाहिए, एक्सक्लूजिंग नहीं होना चाहिए, फ्रॉम रेवेन्यू डेफिसिट। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू व्हाट? 3 एग्जांपल्स ऑफ नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीव्ड। ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट इज जीएफडी लेस नेट डोमेस्टिक लेंडिंग, ट्रू और फॉल्स। एफआरबीएम एक्ट कौन से साल में एनैक्ट करा गया था? ये क्वेश्चंस है। इस सेशन का जो भी आपका स्कोर है उसको आप लोग शेयर कर देंगे मेरे साथ, राइट। हमारा फोन नंबर, हमारा ईमेल आईडी, हमारा वेब एड्रेस, सारी चीजें आपके सामने रखी हुई है, ताकि आपको कोई भी प्रकार से हमारे संपर्क में आना रहे तो आप आसानी से आ सकते हैं। यू शुड डाउनलोड द EduTap ऐप, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल ऐप विच विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जाम प्रिपरेशंस। सो आई एम वेटिंग फॉर सर्टेन स्कोर्स ऑफ योर, कि आप लोगों के 4 क्वेश्चन में से कितने आंसर्स राइट आए हैं। लेट अस सी व्हाट योर आंसर्स आर, राइट। ह्यूमन बीइंग, आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे, बहुत अच्छी बात है, राइट। शिवानी ठाकुर, सर आंसर मेल करना है, मेल नहीं करना है, आप कमेंट कर दीजिए, इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है आपको अपने आंसर्स को, राइट। आप लोगों के जो भी स्कोर्स है, निखिल गुप्ता 4 आउट ऑफ 4 स्कोर है, वेरी गुड निखिल गुप्ता, वेरी गुड, राइट। प्रिया गायरी, आपने प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप होमवर्क क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत मजा आया। दुर्लभ रघुवंशी, आपके 3 करेक्ट है, एक स्किप है, बहुत अच्छा आपका स्कोर है। 3 करेक्ट होना और 1 गलत होने से बेटर है 3 सही होना, और 1 गलत होने से बेटर है 3 सही होना और 1 स्किप होना, बहुत अच्छी बात है। बलीराम, आपके चारों सही है, वेरी गुड। प्रिया, आपके 3 आउट ऑफ 4 है, वेरी गुड। वंशिका, आपके 3 आउट ऑफ 4 है, वेरी गुड। शिवानी ठाकुर, आपके 3 आउट ऑफ 4 है, वेरी गुड, राइट। सौम्या वीरट, आपका जो भी डाउट है आप कमेंट कर दीजिए, आई विल कम बैक टू यू एंड यू विल अंडरस्टैंड, डू नॉट वरी, आई विल एक्सप्लेन टू यू इन अ वेरी ल्यूसिड फॉर्मेट, राइट। चलेगा। ह्यूमन बीइंग, आपने 2 अटेम्प्ट करे, बाकी स्किप कर दिए, बहुत ही अच्छी बात है। चिन्मय, आपको सेशन में मजा आया, बहुत ही अच्छी बात है। जिनको भी सेशन में मजा आया वो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। विद दिस विल ब्रिंग अवर सेशन टू एन एंड। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।